Good morning, ma'am. Good morning. Let's wait for everyone to join in. Okay, I think I can start. Most of you are already there. There is some problem in this. Okay, I guess most of you are already there and I can start. Still, I'll wait for 30 seconds more. Many are yet to join. I can't see Mehak. I can't see Sarita, Farhan, Tejal. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good Good morning. morning, ma'am. Good morning. Fourth lecture is like too heavy. Good morning, Farhan. I hope your fourth lectures are not your practical subjects. By the time it is the fourth lecture, you all are very tired. Uh, I think I can share the screen and I can start since most of you are already joined. Okay. Please let me know if the screen is visible or not. Yes, ma'am. Yes. Okay. Yes, ma'am. Just 1 minute, guys. I'm not able to go back. Just 1 minute, I'll share it again. Yeah. Okay. If the screen is visible, I think we can start. Yes, ma'am, visible. All right. Students, in my last lecture, recruitment and selection, we have started with the modern techniques of job design. Yesterday, we already completed job rotation. Okay. And now today we are going to take the new one, which is job enrichment. Okay. Students, what is job design and what is job redesign? When I say job design, okay, I am talking about the duties and responsibilities that are associated to perform a particular task or to perform my role. That is called as job design, right? Then what is job redesign? When we talk about job redesign, we are, just bringing some creative element in our working style or working pattern so that our job becomes interesting, so that we will not do monotonous work and there is no boredom. Okay, for that purpose, we do job redesign. We have seen so many types. First one was job rotation that I have completed yesterday. What is job rotation, students? You are, jobs that are very similar, kind of, that roles can be changed with the other employee. For example, if you are in the marketing department, you can interchange your role as a PR. If you're working for a PR team, now you can work for the sales team or you can work for the publicity team and so on. Okay, so jobs which are little similar, that those roles can be interchanged. Students, when we talk about job rotation, please remember one thing: we cannot be asking an accounts person to do marketing, correct? Or a marketing person to do accounts. No, we are only going to do the job rotation within the department. All right. So we have seen certain advantages also, and we have seen disadvantages also. I'm not going to revise that. You can refer to the videos that are uploaded on Google Classroom. Moving on to the second type, that is job enrichment. Who is going to read that?
someone very loud and clear, Sarita or Mehak, Okay, anyone? ma'am. Yeah. Job enrichment. Job enrichment term is given by Frederick Herzberg. According to him, a few motivators are added to a job to make it more rewarding, challenging, and interesting. The motivating factors can be, Okay, ma'am, okay, okay. continue. 1 minute. 1 minute. Okay, so what is job enrichment? अभी रोटेशन तो आपको समझ गया हम सब. फॉर एग्जाम्पल, आई, सरिता, फरहान, आदित्य, महक, वी आर वर्किंग इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट. So job rotation मतलब क्या? Sometimes I'm doing work of Mehak, Mehak is doing work of Sarita. Okay, like this. This is job rotation. So that there is no monotony and we are, exploring new roles. All right. And that is job rotation. Now, what is job enrichment? Okay. Here, you are not exchanging your roles. Okay. Here, some motivating factors are added so that, job becomes more challenging, more rewarding, and more interesting. कैसे होगा more rewarding या more challenging या more interesting? Let us see one by one. Okay. Sarita, one by one, huh? Point number Yes, ma'am. A. Giving more freedom. Okay, I think this is something which is going to be very interesting, and I think every employee would want to work with freedom, right? आपको कैसा काम करना पसंद है, freedom में या फिर restrictions में? How do you like to Freedom. work? है ना, freedom ना? Yes or no? Yeah. Yes, Similarly, ma'am. Yes, ma'am. employees also, they would want to work in, with freedom. Freedom does not mean that, they want what do you say, they're not looking for excuses. Okay, freedom means give them some autonomy to, perform their duties. Do not supervise them every now and then. Please trust your employees, they are working for your company. Okay, if I think gone are the days when, managers used to take round on the floor and used to supervise the work of employees. Ab aisa nahi hota. I don't think so. Modern organization must be doing this. Okay. See, students, when I say freedom, okay, I as an employee, I would want to work according to my timings, according to my, according to my method. Of course, I need to follow something called ethical standards and I have to follow what is organization's culture. But yet again, I want something called as freedom. Let me do it in my way. Okay, so that is freedom. If you allow your employees freedom, I think they will be, in a position to make their work more interesting and more creative. अगर restrictions में काम करना है या आपको आपके बॉस के हिसाब से, टीम लीडर के हिसाब से काम करना है, तो आई थिंक दैट इज जस्ट, follow the instruction method. What the boss is saying, we are simply doing that. इससे क्रिएटिविटी तो आएगी नहीं, नंबर वन. नंबर टू, it is going to generate frustration because employee would feel like, he's a machine की तरह वो काम कर रहा है, कोई उसको बोल रहा है और वो बस वो फॉलो कर रहा है. I guess talented people wouldn't want to work like this. So give more freedom. Then point number two. Encouraging participation. Very important. I think I have been teaching you since last year and I've been repeating in my previous lectures also. Please involve your employee. They are a part of your organization, right? So their participation is must. है ना? If you are not encouraging them to participate, I think वो oneness to the organization होता है ना, feeling that, your company, this is your company, वो नहीं आ पाएगा, right? So encourage participation. Tell your employees to be a part of, decision making, to express their thoughts, their ideas. If this is the way you create a positive atmosphere in the company, okay, I think your employees would actively participate. Okay. Any difficulty till here? Am I going fast? No, ma'am. I No, know ma'am. I'm going fast. Actually, ये देखो ना, ये कितना lengthy है. So I'm having a pressure of completing this answer. So I felt I went a bit fast. थोड़ा सा वापस से recap या review जो भी आप बोल लो. So what is job enrichment, students? जब आप कोई motivating factors add करते हो आपकी existing job में, so that it looks interesting and challenging, उसे कहते हैं job enrichment.
please do not get confused in different terms. Job rotation yani kya? We are just, exchanging our roles, okay, within the same department, okay. Job enrichment क्या काम तो मैं वही कर रही हूँ, बस उसमें कुछ कंपनी ने मोटिवेटिंग फैक्टर्स ऐड कर दिया है. क्या है वो मोटिवेटिंग चीजें? नंबर वन दैट वी हैव सीन इज फ्रीडम. Freedom. एम्प्लॉय को जितना फ्रीडम दोगे वो उतना शांति से, उल्टा वो आपका काम है ना टाइम से पहले कंप्लीट करके दे देगा. अगर आप वही उसके ऊपर प्रेशराइज, सुपरविजन, इंस्ट्रक्शन ऐसे करोगे तो आई थिंक क्वालिटी वर्क भी नहीं होगा. टाइम पे शायद दे देगा वो, बट क्वालिटी वर्क नहीं होगा. Second one is encouraging participation. Let your employees be a part of your decision making and participation in different things, not just in decision making. Okay, letting your employee express his thoughts and opinions. Okay, giving ideas, that is also called as participation. जरूरी नहीं है कि मैं मीटिंग बुलाऊं तो ही एम्प्लॉय पार्टिसिपेट करे. ओके, एम्प्लॉय चाहे तो खुद से अपने आप से भी एक्सप्रेस कर सकता है ना कि सर आई थिंक ये काम हमें ऐसे करना चाहिए. दिस इज ऑल्सो पार्टिसिपेशन, राइट? So encourage your employees in participation. Then point number 3. Giving employees the freedom to select the method of work. I think very interesting. किसी का तो माइक, उस्मान, आपने अभी जस्ट ज्वाइन किया और आपका माइक बेटा ऑन है. Firstly, you are coming 10 minutes late. Huh? Okay, so give your employees the freedom to select the method of working. If, for example, I would want to do sales by meeting my customers face to face. Okay, and my boss is asking me to generate sales through, through telephonic conversation. मुझे नहीं जमेगा ऐसा. आई थिंक मुझे, मेरा आइडिया क्या है, आपको सेल्स से मतलब है ना, यू वांट द कस्टमर्स, राइट? So let me meet my customers face to face so that I can push the product, I can provoke the customer, I can get the sales, I can generate interest. Phone पे मैं वो interest नहीं develop कर पाऊंगी. So yes, allow me to work according to my method. Of course eventually मेरा objective क्या है, काम करके काम complete करना है ना. तो वो कौन से मेथड से, उसका अगर अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयज को दे दिया जाए, I think they will be able to achieve your targets. Yes or no, students? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. All right. Any difficulty till here? No, ma'am. No. Okay. Okay. Then next point, point number D. Allowing employees to select the place at which they would like to work. I think if the work can be done from, work from home, then why not? Okay, allow your employees to opt for the place or location they would want to. You should only focus on getting the work done. Okay? You should not focus on, where the employee is sitting and doing the work. Sometimes within the company also, अगर एम्प्लॉय को चाहिए कि वो लॉबी में जाके बैठ अपना लैपटॉप लेकर बैठे या गार्डन एरिया में जाके लैपटॉप लेके बैठ के काम करे, allow him. Don't be very rigid on a place of work. No, this is your cabin and you have to sit here only. If you are very rigid on this, I think employees would not like this kind of approach. So give them the place that, allow them whichever place they would prefer to work for. Then Allowing workers to select the tool that they require on the job. okay, high chances that my employees, to make the work interesting, is asking for additional resources. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टीचर बोल रही है कि मुझे ना आप अगर आपको ऑनलाइन टीचिंग एनहांस करना है तो यू गिव मी दोज Canon cameras so that I can have interesting video lectures. Give me those standing cameras. Give me those different equipments to make. Give me license version of this Zoom platform. ये क्या है? एम्प्लॉय क्या बोल रहा है आपसे? कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल चीजें मांग रहा है, एक्स्ट्रा टूल्स मांग रहा है, so that he can make the job interesting. I think you should do that. You should give your employees whatever he or she is asking to make the job interesting. See, if the job is becoming interesting, automatically the work productivity and the outcome is going to be of amazing quality. And I think आपको उस पे ध्यान देना चाहिए, okay, quality पे.
और लॉन्ग रन में आई थिंक कंपटीशन में ना क्वालिटी वाली चीजें ही एग्जिस्ट कर पाएगी, otherwise you will be out of it, right? So allow your employees whatever tools that they are asking for. And lastly, Allowing workers to decide the layout of plant or office. yeah, I think why not um, giving me the chance to tell you that how my cubicle should look like, how my table should be placed at. Okay, I think जो layout and design, especially at the workplace जहाँ पे एम्प्लॉय बैठकर काम करने वाला है, तो आप उस एम्प्लॉय को पूछो कि आपको आपका केबिन कैसे चाहिए, आपको वॉल का कलर क्या चाहिए। अच्छा, इससे क्या होगा, सी आप जब घर में रहते हो अपने फैमिली के साथ, आपकी फैमिली आपको पूछती है कि आज अगर हम घर पेंट करते हैं तो ये कलर यूज करें, ये कलर, यू फील नाइस ना, आपको लगता है ना यू आर अ पार्ट ऑफ, यू आर अ पार्ट ऑफ द फैमिली एंड यू आर अ पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस, राइट? सिमिलरली Yes. इन केस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो स्टूडेंट्स, आप एम्प्लॉयज को इतना सा पूछ लो कि आपको कैसा वॉल कलर चाहिए, आपका टेबल कैसा आपको चाहिए। एम्प्लॉय को क्या फील होगा पता है, दैट ही इज अ वेरी वैल्यूएबल एसेट टू द कंपनी। Okay, I think through this your slight little approach towards your employees can definitely make your employee feel very motivated. To give you one example, I think last year I have given this example. I don't know if I've given this in this class, but I'll just repeat it. Adi Godrej, who is the owner of Godrej Groups, okay. So what he does is, there's a cafeteria in Godrej campus, all right, and वो cafeteria का layout कैसा था कि management members के लिए एक अलग से sofa seat and very designer table and all of it, and workers के लिए normal जैसे sitting arrangement होता है ना, normal जैसे tables and chairs, nice quality ones, वैसा normal था। okay? तो आदि गोदरेज जब कैफेटेरिया में एक दिन एंटर किया उन्होंने, so he saw this arrangement and he was not happy with it. Okay. उनका क्या मानना था, अरे ये तो आप डिफरेंस क्रिएट कर रहे हो कि ये मैनेजमेंट के लिए इतना पॉश चेयर, इतना पॉश टेबल, और एम्प्लॉयज के लिए ऐसा टेबल नॉर्मल चेयर्स, यू आर क्रिएटिंग अ, कैसे एम्प्लॉय समझेगा कि वी आर वन। So what he used to do is he used to sit along with the, and I think he does this now also. Okay, he sit with the employee next to their normal chair and normal table, जो arrangement है, and he has the meal along with them. अच्छा, इससे क्या होता है ना, employees feel that oh, my boss is also sitting, the owner of the company is also sitting on this place where I am sitting to have my food. He treats all the employees like that they are very important, as good as family member. So वो उनके साथ बैठ के खाएंगे, जनरल बातें करेंगे, not related to work, हाँ, he general, how are you and how is everyone at your home, what is your son doing, what is your daughter doing. तो इससे एम्प्लॉयज को क्या फील होएगा पता है, फॉर अ फाइंग एट एन चांस, मैं बैठी हूँ और आदि गुजरेज सर आके मेरे साथ में लंच कर रहे हैं और वो मुझसे नॉर्मल बातें कर रहे हैं, I would be so privileged, like, oh my God, such a big person and sitting and having lunch along with me. I'll go home with a huge smile and I will share this with everyone. अच्छा, ये आदि गुजरेज ने कुछ स्पेशल कर दिया क्या? नहीं, उन्होंने सिर्फ वही किया जो एक जस्ट अ स्मॉल चेंज इन द अप्रोच। इससे क्या हुआ, एम्प्लॉय को क्या फील हो रहा है, ओ माय गॉड, ओके, द ओनर ऑफ द कंपनी इज हैविंग लंच विथ मी, मैं कितनी वैल्यूएबल रहूंगी कि मेरे साथ बैठ के खाना खा रहे हैं। एंड ही हैज दिस नॉर्मल, this is his practice. I'll give you one more example. MP Ramachandran sir, who is the owner of the laboratories, if you know the brand Ujala चार बूंदों वाला, सुना है आपने वो? Yes, ma'am. हाँ। So owner of that company, Mr. MP Ramachandran sir, he once visited our college premises and उनको एक स्टूडेंट ने पूछ लिया, सर आपने इतने कम स्पैन ऑफ टाइम में इतना प्रोग्रेस कैसे किया, एंड हाउ डिड यू मैनेज टू मेक अ कंपनी सच अ बिग साइज एंड विद सो मेनी पीपल वर्किंग? You know what he said? My dear student, R&D and all this is okay. Process में नई चीजें लाना, नए introduce करना, all that is fine. Okay. He said that my simple, way of working is I treat my employees very important. So I call them by their name.
ओके, तो अगर मेरे को वो एम्प्लॉय से बात करते हुए उनका नाम पता चलता है या उनके बच्चों का नाम पता चलता है, तो मैं ना नेक्स्ट टाइम जब उनको मिलता हूँ तो आई आस्क देम, यू नो, आई आस्क अबाउट देयर चिल्ड्रन और उनका नाम लेकर के। इससे एम्प्लॉय को क्या फील होता है पता है? ओ वाओ, द ओनर ऑफ द कंपनी नोज माय नेम, ही नोज द नेम ऑफ माय डॉटर, माय सन। आई थिंक आई एम अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन वर्किंग इन दिस कंपनी। See, this is slight approaches that the companies can just, you know, do towards the employees, and they will feel motivated. I hope there is no difficulty in understanding job enrichment. No, ma'am. Anything that you did No, not ma'am. understand? Ma'am. Sure, easy to understand. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. all right. So we will move on to advantages of job enrichment. Who is going to read that? Sarita can continue, or Yes, yeah. ma'am. Advantages of job enrichment. First one, when a certain amount of power is given to employee, it makes the job more challenging and interesting. अभी मेरे सर ने मुझे कुछ काम दिया है और मुझे फ्रीडम भी दे दिया कि आप आपके हिसाब से करो, डू इट इन योर स्टाइल। ओके, आई गिव यू ऑल द फ्रीडम, टाइम फ्लेक्सिबिलिटी, वर्क प्लेस फ्लेक्सिबिलिटी, घर से करो या ऑफिस से करो, सुबह में करो या दोपहर में करो, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। गेट द वर्क डन बाय इवनिंग। ओके, सो या विद इन 2 days, या जो भी एक डेडलाइन दे दिया है। अभी आपको क्या लगता है स्टूडेंट्स, मेरे हाथ में आया हुआ प्रोजेक्ट, क्या मैं उसको एकदम सिंपल तरीके से करूंगी? मुझे इतना पावर दे No. दिया, क्या आई एम एम्पावर्ड नाउ। ओके, डोंट यू थिंक आई एम गोइंग टू मेक इट इंटरेस्टिंग एंड चैलेंजिंग? Yes, ma'am. See why? Because I'm given that power, okay, to work according to my method, at my convenient place, at my convenient time. I think when such type of power is, you know, given to the employees, employees would try to, you know, do justice to that power. Okay, आपको अगर फ्रीडम मिलती है ना, तो फ्रीडम के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास भी ऑटोमेटिकली आएगा। Okay? वही अगर इंस्ट्रक्शन होगा ना कि आप ऐसे काम करो, आप ऐसे काम। See, Sakshi is joining now. In the previous lecture also she was very late. I'm not taking her. Whoever is the class representative, please communicate. Okay. So yes, if I'm given certain powers, okay, I make sure that, you know, I make my project look interesting, and I do it with very in a way challenging, so that you know, I just do justice to the power given to me. Okay, point number 2. Job enrichment is the method of employee empowerment. This is as good as employee empowerment. Okay, अगर आप एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हो, यानी आप अपने एम्प्लॉयज को एम्पावर करते हो, है ना? यू आर एम्पावरिंग योर एम्प्लॉयज. So yes, job, and you know now what is the meaning of empowerment? Making your employee feel powerful. Okay, see, you can either have a set of employee who is indifferent, or a set of employee who is empowered. Okay, it completely depends on you as an employer, you know, on what kind of approach you are using towards your employees. अगर आपका अप्रोच बहुत रिजिड स्ट्रिक्ट ऐसा है ना, तो आपको हमेशा इंडिफरेंट एम्प्लॉयज मिलेंगे। कि वो लोग जो शाम को 6 बजे का शिफ्ट टाइमिंग, 6 बजे खत्म होता है, 5 बजे से घड़ी देखना स्टार्ट कर देते हैं, कब 6 बजे, एंड आई टेक अ लीव। Why this is happening? Because the employer is having that kind of approach. वही अगर एम्प्लॉयर थोड़ा फ्रीडम दे, ओके, थोड़ा मोटिवेट करे एम्प्लॉयज को, एम्प्लॉयज कभी अपना घड़ी नहीं देखने वाला है, तो वो अपना काम फिनिश करके जाएगा विथ ऑल गुड क्वालिटी वर्क. ओके, सो यस, दिस एम्पावरमेंट. Then point number 3. Job enrichment improves the decision making ability of the employee by asking them to decide on factory layout, methods, and style of working. हाँ, अगर आप एम्प्लॉयज को पूछ के काम करते हो, मतलब पूछ के काम करना यानी उनका सजेशन लेते हो, ओके, ऑन डिसाइडिंग द फैक्ट्री लेआउट, ऑन स्टाइल ऑफ वर्किंग, आई थिंक एम्प्लॉयज डिसीजन मेकिंग एबिलिटी विल ऑल्सो इम्प्रोवाइज. यू नो ना व्हाट इज डिसीजन मेकिंग एबिलिटी? देखो, अगर आपको कोई डिसीजन लेने देगा ही नहीं, तो आपका डिसीजन मेकिंग एबिलिटी खराब होने वाला है.
For example, your family member does not give you any power to take decisions about, कुछ भी खरीदना है तो आप आपसे पूछते ही नहीं है, आपके decisions सजेशंस लेते ही नहीं है. तो क्या होगा पता है, स्टूडेंट एट अ पॉइंट ऐसा आएगा कि आपका डिसीजन मेकिंग एबिलिटी खराब हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, दोज पेरेंट्स हु नेवर अलाउ देयर चिल्ड्रन टू यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल, देखो वो बच्चों को ना बाद में जाके जॉब प्लेस पे बहुत प्रॉब्लम होती है. पता है क्या प्रॉब्लम, उसको ना मालूम ही नहीं रहेगा ट्रांसपोर्टेशन कैसे, कौन सा बस से जाना है, कौन सा ट्रेन से जाना है. ओके, those parents who are very controlling in nature and does not allow their children to talk to people, ऐसा तो वो क्या होगा पता है, वो उनका हमेशा वैसे ही रह जाएगा कि ह्यूमन बीइंग इज अ क्रिएचर ऑफ हैबिट. आप अभी उसका वो बन गया है वो नेचर. अभी वो कंपनीज में जाएंगे तो कंपनी में लोगों से इतना घुल मिल नहीं पाएंगे, विल नॉट बी एबल टू टॉक टू एवरीवन. व्हाई? बिकॉज बचपन से वैसा नेचर रहा है. सिमिलरली डिसीजंस मेकिंग में, if people are not involving you, or if you are not involved in decision making, automatically your ability to take decisions will become poor. Okay, so by doing job enrichment, okay, you are improving the employee's decision making ability. Okay, point number 4. On the basis of the decision making ability, employees can be marked for future promotion. हाँ, what if मैंने अपने एम्प्लॉय को पूछा कि ये प्रोजेक्ट को कैसे कंप्लीट करना चाहिए, एंड एम्प्लॉय बहुत इंक्विजिटिव, बहुत टैलेंटेड, बहुत ब्रिलियंट, उसने बहुत ही अच्छा आइडिया दिया, ऐसा कुछ जो शायद मैं भी नहीं सोच सकती थी एज अ, मे बी एज अ बॉस, शायद मेरे दिमाग में भी ऐसा नहीं आ सकता था. एंड दैट एम्प्लॉय इज गिवन मी सच वैल्यूएबल इनपुट्स. आई टेल यू व्हाट स्टूडेंट्स, इससे होगा क्या, in my mind, I'm going to remember that particular employee. Okay, एंड मेरे को ये रहेगा कि फ्यूचर में जब प्रमोशन की बात आएगी ना, मैं ऐसे एम्प्लॉयज को डेफिनेटली कंसिडर करूंगी. ओके, बिकॉज उस एम्प्लॉय ने बहुत ही वैल्यूएबल इनपुट्स दिया है. आई होप देयर इज नो डिफिकल्टी टिल हियर. No, ma'am. No, ma'am. Okay, moving on to the last one. Okay, before Enrichment this, makes I tell you one minute, सरिता, पॉइंट नंबर 4 में जो फ्यूचर प्रमोशन है ना, ये चीज याद रखो, कंपनी में देयर इज समथिंग कॉल्ड सक्सेशन प्लानिंग. अगर कंपनी में कोई इंपॉर्टेंट की पोजीशन वेकेंट होता है, समझो कंपनी का कोई एक बहुत इंपॉर्टेंट मैनेजर कंपनी छोड़ के चला गया, या फिर उसका एक्सीडेंट हो गया, या वो लीव पे है, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरे को मेरे ऐसे एम्प्लॉयज ना याद आएंगे जिन लोग बहुत अच्छा क्रिएटिव आइडियाज देते हैं, वैल्यूएबल है, मैं उनको प्रमोट करूंगी. करेक्ट ना? सो ऑन द, बिकॉज देयर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी इज वंडरफुल, राइट? दे आर लॉजिकल, दे टॉक रेलिवेंट, तो मेरे को ऐसा एम्प्लॉय चाहिए वो पोजीशन पे. ओके, लास्ट पॉइंट. enrichment makes the job holder more responsible and accountable for job as they are praised for good work and blamed for the poor work done. I think this is very interesting. If autonomy is given to me, freedom is given to me to get the work done. Okay, and if I am doing the great work, I will be definitely praised. Okay, I will be promoted. And if I'm misusing that freedom, okay, and I will be blamed for the poor work quality. Okay, so it will be completely on the employees. Okay, to get appreciated, okay, or to be blamed for their work done. All right, so because job enrichment is making you accountable. अगर कंपनी आपको फ्रीडम देती है तो उस फ्रीडम के साथ साथ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देती है. I hope there is no difficulty over your students and simple to No, understand. ma'am. Yes, ma'am. No, ma'am. Okay. There are 4 points of disadvantages, yeah, for problems of job enrichment. Can we complete that very quickly? Yes, ma'am. Yes, Okay, ma'am. all right. Okay. Okay, Sarita, you can start from here. Job enrichment is normally done for jobs bearing a less responsibility. However, such jobs may be actually challenging to be performed. This make enrichment a relative term. हाँ, जॉब एनरिचमेंट क्या, आपको जॉब को चैलेंजिंग बनाना है.
लेकिन हो सकता है वो जॉब ऑलरेडी बहुत चैलेंजिंग है, तो देयरफॉर इट इज अ वेरी रिलेटिव टर्म. ओके, you cannot make something more challenging if it is already challenging in nature. If it is inherent challenging, उसको और कितना challenging बनाओगे आप, करेक्ट ना? So it is a very relative term. It cannot be. एक simple example दे देती हूँ. ओके, मेरे हिसाब से एडवर्टाइजिंग तब अच्छा होगा जब वो फेयर होगा. मतलब अगर मैं बोल रही हूँ ये क्रीम से आप गोरे होने वाले हो तो पक्का होने वाले हो, जेन्यून है तो ही वो एडवर्टाइजिंग का मीनिंग है. लेकिन फरहान बोलता है नहीं मैम, एडवर्टाइजिंग थोड़ा फनी होगा ना तो वो थोड़ा ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है. जैसे कि ए बंटी तेरा साबुन स्लो है क्या, ऐसे टाइप का कुछ कैची लाइन, या फिर क्या आप क्लोजअप करते हैं, लाइक दिस. तो अगर आप ऐसा कुछ करोगे ना मैम तो एडवर्टाइजिंग बहुत इफेक्टिव होगा. ये बहुत सब्जेक्टिव मैटर है. मैं भी अपनी जगह करेक्ट हूँ, फरहान भी अपनी जगह करेक्ट है, करेक्ट ना? सो जॉब एनरिचमेंट इज अ रिलेटिव टर्म. मुझे अगर कोई फ्रीडम दे रहा है ना काम करने के लिए कि आप इसको चैलेंजिंग बना सकते हो, मैं क्या चैलेंजिंग बनाऊं, ऑलरेडी वो बहुत चैलेंजिंग है. ऑलरेडी इट इज वेरी चैलेंजिंग इन नेचर. So job enrichment is a very relative term. It differs from, it's subjective also, differs from person to person. Second one, Enrichment assumes that workers are not satisfied with the present level of responsibility and that they need addition to it. But such additions to their existing level of roles and responsibilities may at that time create problems and lower the productivity of the organization. now listen very carefully. Job enrichment क्या आप motivating factors add करते हो. Okay, आप employees को फ्रीडम देते हो, आप उनसे सजेशंस मांगते हो, आप ऐसे सब करते हो ताकि एम्प्लॉय एम्पावर्ड होके काम करे. ओके, अच्छा ये क्यों आप ऐसा सोचते हो? आपको ऐसा लगता है आपके वर्कर्स शायद सेटिस्फाइड नहीं है प्रेजेंट रोल से. लेकिन हो सकता है ना स्टूडेंट, वर्कर ऑलरेडी प्रेजेंट रोल में बहुत कुछ कर रहा है ना? तो इफ अगर वो और कुछ नया ऐड करने जाएगा टू मेक इट चैलेंजिंग, हो सकता है कि वर्क प्रोडक्टिविटी खराब हो. इफ ऑलरेडी माई वर्क इज वेरी चैलेंजिंग, उसके अंदर मैं और कुछ क्रिएटिव एलिमेंट लाने की कोशिश कर रही हूँ, उसके अंदर मैं और कुछ चैलेंजिंग फैक्टर लाने की कोशिश कर रही हूँ, chances are my overall productivity will get affected. Already certain things, certain work itself is very challenging in nature. Okay, and it does not require any additional duties and responsibilities. If I'm doing that, high chances are my work productivity will go down. Point number 3. Job enrichment can become effective when workers are involved in the process of job redesigning. However, evoking such workers' participation is a challenging task. I think just like teaching, learning, it can be more effective if you all are involved. But to get you involved is challenging. है कि नहीं? मेरे को बार बार बोलना पड़ता है. Students respond, students give answer, right? Similarly, job enrichment also. I am ready to give freedom to my employee. I am ready to ask his participation. लेकिन वो करवाना, okay, उनसे participation लेना, it's not easy. Okay, workers have their own set of thought process. उनको ऐसा लगता है अगर मैंने आइडियाज दिया, अगर फनी निकला तो, अगर वो आइडिया, अगर बॉस को ऐसा लगेगा ये बहुत तो होशियार बन रहा है मेरे बारे में, अगर बॉस ने ऐसा सोचा तो, अगर मेरा आइडिया बहुत बहुत डिफिकल्ट रहा तो अब मेरी जॉब तक चली जाए. Okay, this kind of thought process is stopping any employee to express their ideas and to participate. Okay, so job enrichment, though it's a very interesting concept, okay, however, getting the workers' participation is extremely difficult. Okay? अब मैं कितना ही अच्छा पढ़ाऊं, एक एक लाइन क्यों ना पढ़ाऊं, okay, high chances that getting participation from students all the time is not possible. I know this is the fourth lecture since morning 7:30. आप continuously back to back lectures attend कर रहे हो. मैं आपसे कैसे expect करूं अभी fourth lecture में कि आप सब आंसर्स देते जाओ, आप इन्वॉल्व रहो, आपका इंटरेस्ट इंटैक्ट रहे. It's not possible. Now I need to understand that you all are also listening since morning, right? So job enrichment is very interesting. Okay, however, to get the employees involved is a big challenging task. And the last one is Additions to the existing role may not
always be easily accepted by the workforce. Any challenge is many a times resisted, and the same applies to job enrichment as well. Any additional duties and responsibilities will bring certain changes. I think workers certainly don't like changes, and कोई भी employee in fact उनको changes होगा तो इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग आती है कि नए चेंजेस के साथ मैं काम कर पाऊंगा कि नहीं, क्या ये चेंजेस फेवरेबल है या नहीं. ओके, ये आपने सुना होगा ना, रेजिस्टेंस टू चेंज. इंडियन वर्कर्स दे हैव दिस कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, दे रेजिस्ट टू चेंजेस, मतलब उनको बदलाव पसंद नहीं है. And job enrichment call for changes. Okay, so high chances that employees might not support this, and eventually job enrichment becomes invalid. I hope there is no difficulty in the answer, students. No, No, ma'am. ma'am. No, ma'am. No, क्या ma'am. स्टडी किया आज आपने? जॉब एनरिचमेंट. Job enrichment. हाँ, अभी तक आपने दो चीज स्टडी किया है. पहले तो जॉब रोटेशन, जो आप अपना रोल्स इंटरचेंज करते हो, और जॉब एनरिचमेंट जहाँ पे मोटिवेटिंग फैक्टर्स ऐड किया जाता है ताकि आपका जॉब रिवॉर्डिंग लगे, चैलेंजिंग लगे, इंटरेस्टिंग लगे. ओके, so we have seen how it can be done, and we have also seen the advantages and problems. Next lecture I will take job enlargement, and we have work specification. उसके बाद में आंसर फिनिश. उसके बाद एक बार रिकैप करेंगे. ओके, फिर उसके बाद में we have 2 more answers and the first chapter will get over. अच्छा, let me tell you students, recruitment and selection, the syllabus is very vast. Now I cannot go very slow. Last 2 weeks I was going very slow, but I cannot keep the same pace. I need to catch up the speed. Okay, however, आपको कहीं पे भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है, you can stop me and you can ask me. All right? Ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, on that note, I think I'll end the session. Thank you so much for joining in. Have a nice day ahead. Thank you, ma'am. Thank Thank you, you. ma'am. Thank you so much, Have a ma'am. nice day, ma'am. Have a nice day. Bye bye. Bye, ma'am. Bye.